Hello everyone and very good evening. I hope everyone is fine and good. So today in the class we are going to move further in electrostatics. कल के class में we did up to electric field, right? We have drawn some structure or something of that sort, right? So आज की class में basically we will read more about electric field and also we will do some questions. ठीक है? चलो. So, okay, dialectic constant किसी का question है. This I will be dealing with after some 4 or 5 classes. ठीक है. जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगी या फिर when I will deal with dialectic, then I will tell you what is this dialectic constant. But it's related to permittivity and all. For now, I can tell you this much. ठीक है. उसके बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा आई मीन कैपेसिटर का देन पता चल जाएगा क्या होता है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. चलो. सो कल के क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लोर किया था. कोई भी चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको दिखाने के लिए वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस विल लुक दिस स्ट्रेट लाइक दिस एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड समवेयर ऑन इंफिनिटी. ठीक है. दिस इज द थिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अगर हमारे पास नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है तब क्या हो रहा था, यहाँ पे फील्ड लाइंस आकर एंटर करेगा. दिस वाज द थिंग, राइट. एंड इफ देर आर टू चार्जेस इन द सराउंडिंग, देन एक प्लस ले लो दूसरा माइनस ले लो. So some field lines coming out from positive charge will end on negative charge. Some will go like this, others will go like this. But there will be curved field lines, more curved field lines. Why? Because positive charge is interacting with negative charge. ठीक है. व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ये क्या है? आई मीन फिजिकल बोर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट, कन्हैया? Okay, no, it's not possible as of now. This is the system actually. Sorry. ठीक है. Okay. So this is this thing. Similarly, if there is positive charge, another is also positive charge, then there will be repulsion, and so field lines will curve away from each other. ठीक है. ये कैसे curve करेंगे away from each other? So field lines will look like this. इस तरह से कुछ बना सकते हैं. डन है. उसके बाद हमने फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक देखा था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट फॉर ऑल चार्जेस, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप बनाने का मतलब ऐसा होगा कि फील्ड लाइन इज कमिंग फ्रॉम द सेम चार्ज एंड ऑल्सो एंडिंग एट द सेम चार्ज. दिस इज नॉट पॉसिबल. Field line cannot intersect each other because if they are intersecting, then at a certain point, direction of electric field, which is tangent on the field, will be two. There will be two tangents. And at a point, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है ना. जैसा कि कल भी मैंने बताया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज एक फील्ड लाइन मैं ऐसे बना रही हूँ. सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट टू दिस पॉइंट. ठीक है. प्रॉपरली टेंजेंट बनाना. If there is another field line which is intersecting like this, then at this point there can be one more tangent, which is not possible. क्योंकि एक ही पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन दिख रहा है, which is not true. So this cannot be the case. Then थर्ड ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. कल भी मैंने बताया था कि अगर प्लस क्यू के लिए फील्ड लाइंस आप बना रहे हो और इफ यू आर लेटिंग 4 फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, then for plus 2q charge you must draw such 8 lines. So more the value of charge, more there will be field lines. And if there are more field lines, it means what? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है field lines will be more closer to each other. ठीक है. वो field lines क्या होंगे? आपस में ज्यादा close होंगे because there are more field lines. ठीक है. Again, the last thing that you can read it, wherever field line is more crowded, their electric field is more strong. ठीक है. That I will explain better later also. So let's first do one question.
तो ये क्वेश्चन है, आप लोग टाइम लो करो एंड लेट मी नो योर ऑप्शन इन द पोल सेक्शन. ऑल्सो यू कैन लेट मी नो योर आंसर इन द चैट सेक्शन. ठीक है. हेलो. ओके. I have unmuted everybody. So if anyone needs to speak, you can raise your hand. I will unmute. Okay. Okay. नवोदय. नंदू. ठीक है. Correct. JMP. Haveri. Yes. देखो, one is there with name HP. Please change your account name to your real name, please. तनुजा. ठीक है. Very good. From this time onward, I won't be calling out such accounts. ठीक है. Even if you have doubt, I won't read that. So that is going to be for sure. इसलिए if you want to get heard, please change your account name to your actual name or to the name of your school if you are in school then. ठीक है. So many of you answered. Let's check in the poll section. 15 of you has answered. 9 answers are correct. Let us check now. So यहाँ से क्या दिख रहा है? What is the question? Field lines are drawn here in the question. One charge is Q1, another is Q2. What are the signs of two charges? दो charges का sign क्या है? Are they positive or negative? So Q1 के लिए अगर आप देखो तो field line is ending on this point, on this charge. And field line end किसके लिए करता है? For negative charge. For negative charge, field lines will end on it. So here it is ending. It means Q1 is negative. Here also it is ending for Q2. Then this is also negative. So both are negative. ठीक है? Clear है? चलो, नाउ वी विल लर्न वन बेसिक थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें. ठीक है. जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए पढ़ा. डन है. नाउ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो लेट्स डील विद दैट थिंग. Suppose कर लो there is a charge Q here and at any distance R we have to calculate electric field value at some point P, let's say. So electric field at point P is then written as KQ by R square. This is the value of electric field. Also you can define electric field as force acting per unit charge. This electric field can also be defined as this. जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्मॉल क्यू चार्ज रखते हो, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग? सो फोर्स एक्टिंग हियर विल बी के क्यू क्यू बाई आर का स्क्वायर. एंड इफ यू कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट चार्ज हियर एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू, then that will be equal to kq by r cube. So for any point charge q, if you have to calculate electric field at any distance r, then that is equal to kq by r square. ठीक है. That is what I'm explaining. है ना? फॉर्मूला ही तो बताया ना मैंने. ठीक है. So I mean what is there in writing each and every I mean definition and all, वो तुम्हें बुक्स में मिल जाता है. बेसिक थिंग जो हम समझ नहीं पाते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉन्सेप्ट. So that is what I'm dealing with more here. Then definition things you will get everywhere in books, in other classes or something. But what you actually often forget, I mean often struggle to get is concepts. So here I will be dealing more with concepts, because in this class actually you're sitting here so that you, so that these classes can help you with your competitive exams, right? Like JEE mains, JEE advanced, NEET or whatever competitive exams are there. ठीक है. So इसलिए मैं फोकस ज्यादा करती हूँ कॉन्सेप्ट पे. डन. So electric field lines for any at any point P, because of point charge Q, can be written as KQ by R square. Done है. That can also be written as force acting per unit charge.
ठीक है. And when we actually try to calculate electric field at point P, experimentally अगर मैं बताऊं तो we take here test charge, and this test charge we take as Q as, I mean Q का वैल्यू काफी छोटा होता है. It's a very small charge. Why small charge we take? So that this small charge Q is not able to disturb this capital Q charge, because of which we are going to calculate the electric field. है ना, क्योंकि अगर ये कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज अगर स्ट्रांग होता है, then it will strongly repel capital Q charge, and in that case it may start moving. Done it? So for calculating electric field at any point P because of certain charge, what we do is क्या करते हैं हम? Yes, test charge will create field. Definitely they will, no matter how weak it is, no matter how small it is, ठीक है? Q तुम्हारा कितना भी small Q ना हो, it will create some electric field. But but here we are interested in calculating the electric field because of capital Q charge. So we are not talking about the electric field getting generated by small q. So what I'm trying to say is, when you have to calculate electric field because of any strong charge at any distance p, what we do is we keep here a test charge which is of very small magnitude. We calculate force का value. Done है? हम ऐसा करते हैं experimentally, and then electric field is calculated as force per unit charge, where charge tends to almost zero. I mean, Q is very, very small. Even if you want to calculate electric field because of this test charge, you can do by using even more smaller value of charge. Done it? So that's always possible. And no matter how small is the charge, there will be electric field around it. है ना? So it will be there. Done it? अब चलो कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं. सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से इट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, है ना? पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? बाहर की तरफ आ रहा है. तो इट इज लाइक दिस. नाउ द थिंग इज, अब अगर मैं, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, then both are same charge in nature. One is positive, another is also positive. I am trying to calculate, let's say this is second charge, this is first charge. So I am trying to calculate the direction of force acting on 2 because of 1. So what will be the direction of force acting on 2 because of 1? 1 will repel 2, right? So repulsion means it will push it away from itself. So in this direction. ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा. अब तुम देखो उसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. लेट्स से ये एक काम करती हूँ, एक सेकंड, मैं क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर. ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ था. मैंने क्या बोला? वेयर द फोर्स, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट? इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब वी कैन से दैट force on positive charge act in the direction of electric field. क्योंकि यहाँ पे अगर अगर मैं चार्ज को यहाँ से डिलीट कर दूं, मतलब मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट चार्ज इज देयर, only electric field is shown. Let's say only electric field is shown, and you are asked that if we will keep here a positive charge, in which direction force will act? So force will act on this positive charge in the direction of electric field. हमेशा याद रखना फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इफ यू कीप one charge is plus q, another is minus q. So on minus q, force will act in which direction? In this direction. It will attract minus q towards itself. यानी कि फोर्स, चलो सेम चीज को अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ. सो यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, और यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज था, है ना, because of which electric field is there. So this positive charge will attract negative charge. So force acting will be in this direction. यानी कि opposite to the direction of electric field. So lump sum में याद रखना तुम कि force on positive charge acts in the direction of electric field. चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, force on positive charge क्या होता है? यही चीजें जब बाद में मैं पूछूंगी तो लोग भूल जाते हैं. ठीक है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन करने में.
डन है। सो इसको याद रखना है। एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट। चलो किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है तो बताओ। सब लोग समझ गए या किसी को डाउट है? लेट मी नो। ठीक है। अगर नहीं डाउट है तो बेस्ड ऑन दिस इटसेल्फ वी विल डू वन क्वेश्चन। चलो। दिस केम इन नीट 2018। ओके नवोदय, थैंक यू। यू आर फ्रॉम विच नवोदय? डू दिस क्वेश्चन, लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, देर इज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field. So there is electric field in a region. Electric field direction is in vertically upward sense. So it is like this. And then there is an electron falling. Suppose कर लो electron was initially here and it is falling through height h. So let's say up to this height it fell down. ठीक है, up to this point. So it is falling in this field through height h. Done है? So basically vertically upward का मतलब अभी जब जिस रूम में भी तुम बैठे हो उस रूम में अगर तुम लाइन लाइन ऐसे बना रहे हो, so that is basically vertically upward और downward direction. Done. सो सपोज कर लो तुम यहाँ बैठे हो और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अपवर्ड इन डायरेक्शन, अपवर्ड इन डायरेक्शन, यस. एंड देयर इज वन इलेक्ट्रॉन which is falling down through height h. So initially it must be at certain height, finally it is at certain height, and the displacement that it has covered is h. उसके बाद क्या हो रहा है? Direction of electric field is now reversed. So now in second scenario, there is again electric field in vertical sense, but in vertically downward direction. ठीक है. And now proton is allowed to fall from the rest. और अब क्या है, एक proton है हमारे पास and we are letting it fall from rest through the same vertical distance. It is also falling down through a distance of h. h distance से ये भी गिरा. ठीक है. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is what? Done है. किसका time of fall ज्यादा होगा? Okay, that's not correct. You can ignore here gravitational force. क्यों इग्नोर कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, देन ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि व्हेन पार्टिकल इज फॉलिंग डाउन in vertical plane there is also gravity acting, right? But gravitational force will be very little because mass of electron and mass of proton is of range of 10 to the power minus 31 and minus 27. So actually it's very small in comparison to the electrostatic force. So तुम gravitational force को इस calculation में क्या कर सकते हो? neglect कर सकते हो. ठीक है. Yes. Yes, chain be Haveri. That's not correct.
चेक करो एक बार सही से. Yes, in the option I got total 19 options. 5 of them are correct. Let's now discuss it. ठीक है. So अगर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अगर देखो, अगर सिंपली ग्रेविटी का क्वेश्चन होता तो कैसे करते तुम. देयर इज अ मास m फॉलिंग थ्रू हाइट h. व्हाट विल बी द स्पीड की बात करिए ना. No, time of fall of electron. So in what time this mass will fall through height h? So s equal to equation use कर लो, ut plus half at square. So mass is just starting from rest, it means u is 0, है ना. s is h half gt square. So time क्या हो जाता, 2h by g. Here it is falling down under the influence of electrostatic force. ठीक है. तो डिफरेंस बस यही है कि एक्सेलरेशन की जगह तुम्हें क्या लिखना है, नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग. सो फर्स्ट केस में आप चले जाओ, इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग डाउन. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड सेम. So force acting on electron in the first case will be in which direction? In this case, force acting on electron is in downward direction. क्यों? क्योंकि this is a negative charge and on negative charge force acts opposite to the direction of electric field. तो force downward लगा. force का value क्या होगा? force is what? अभी अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, force per unit charge. ठीक है. so force क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज. so here force acting will be electric field into charge, that is E के बराबर. ठीक है. ठीक है. Okay, JNB Hyderabad. You were saying something? Let me know. So this is force. Acceleration क्या होता है? Acceleration होता है force by mass. So E into E by mass of electron. So acceleration in first case is this. Now come back to the second case. So second case में acceleration क्या होगा? There is proton this time falling in the downward sense. Force will act E into E. Force is same value, right? Direction of force will be in downward sense also, because here charge is positive, uh, field is in downward direction. So force will act in the direction of electric field because charge is positive. And what will be the acceleration here? Here acceleration will be E into E by mass of proton. देखो, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बेसिक में तुम लोगों को बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या है. मैंने बताया था ना, सीट दिया था तुम लोगों को. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻³ होता है. मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तुम्हारा 10⁻27 kg के रेंज में होता है. तो मास दोनों का डिफरेंट है. तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन को कंपेयर करो, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर. सो ए इज ग्रेटर देन ए डैश. ये हमें पता चल गया. डन है. और अगर तुम्हारा ए इज ग्रेटर देन ए डैश, एक्सेलरेशन जाता है तो वो ज्यादा जल्दी से गिर जाएगा. यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. ठीक है. अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेशन करके देख लो. एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, अभी के लिए एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, ए जी नहीं है. ठीक है. तो चलो एक काम करते हैं, कॉमन ए की टर्म में टाइम को निकालते. तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा, 2h बाई ए. ठीक है. सो इन फर्स्ट केस टाइम विल बी हाउ मच, 2h बाई ए. एंड इन सेकेंड केस टाइम इज हाउ मच, 2h बाई ए डैश. अब देखो ए इज ग्रेटर देन ए डैश, सो ए ग्रेटर है, टी1 विल बी स्मॉलर. ए बड़ा है, टी1 विल, टी2 विल बी, सॉरी ए डैश छोटा है, टी2 विल बी bigger. ठीक है. So what will be the correct answer? The time of fall of electron in comparison uh, to the time of fall of proton is what? Small. So correct answer will be A. Janvi, Haveri, how many of you are not able to understand anything? Raise your hand, just raise your hand. Because that is not going to work anymore, my dear. You need to have a homework thing done. ठीक है. थोड़ा तो ध्यान से देखो तुम लोग. Randomly, if you people are just coming out and saying you are understanding nothing, that is not going to help you, first of all, and also that is not going to help me, क्योंकि तब मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें explain क्या करना है. So be specific, try to be specific. कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया? Can you tell me?
हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? देखो, बी फ्रैंक, डोंट नीड टू बी स्केरी ऑफ एनीथिंग। ज्यादा से ज्यादा मैं एक दो बात सुनाऊंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगी ना। ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, अदरवाइज व्हाट एल्स आई कैन से, राइट? कुछ सजेशन दे सकती हूँ, बट अदरवाइज नथिंग एल्स। ओके, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू मोर कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग वाले कितने लोग हैं, ये बताओ। आई कैन रिपीट क्वेश्चन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मेनी ऑफ यू कुडंट गेट एनीथिंग? ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होता है, यू कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसका मतलब है आइदर यू कुडंट डू द होमवर्क और यू डिडंट, यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दैट्स नॉट केस, राइट? देखो, इसलिए कहती हूँ थोड़ा मैकेनिक्स पढ़ लेना तुम। इसलिए कहती हूँ थोड़ा ना तुम लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्लास में आकर अगर सोचोगे कि मैजिक हो जाए, मैजिक नहीं होता है यार। मैजिक जब अलोन तुम बैठे होते हो ना, तब होता है, व्हेन यू डू वर्क। ठीक है, मैजिक इज देयर, आई विल टेल यू। क्लास में क्या होता है ना, देर इज 1 hour क्लास, वी विल बी डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स। तुम्हारा एफर्ट एक्चुअली ज्यादा होना है, ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, डन है। और इस इलेक्ट्रिक, जैसे मैं सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस होंगे, बट सारे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती ना, तो मैंने कुछ ही लाइंस बनाए। और इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन जो है, देर इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज फॉलिंग डाउन थ्रू हाइट h. इट इज आस्क्ड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉल डाउन। तो सिंपल है, फर्स्ट केस में पहले तुम टाइम निकाल लो। इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव स्टडीड, राइट? एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. So here, if you know acceleration of electron, if you know initial velocity of electron, and if you know through what distance electron is falling down, then you can calculate time, right? In the question, it is given through h height it is falling down. Okay, then so s is given, that is h, and it is also given that electron is falling from rest. So initially electron's velocity is zero. I mean, u is also known, that is zero. Now, what is this acceleration? So you need to see what is the force acting. So electron is falling under the influence of electric field, and force acting because of electric field is how much? Whatever charge is there in electric field into electric field ka value. What will be the direction? That will depend on the nature of charge. If it is negative, then force will act opposite to the direction of electric field. Otherwise, it will be different. Okay. So यहाँ negative charge है. Electric field is in upward sense. So definitely electric force will act in the downwards. What will be acceleration? Force by mass. पढ़े हो ना? So force कितना लगा? QE. What is mass here? QE by m. Mass of electron. So put here now h, sorry, half a t square. A का भी वैल्यू तुम्हें पता है, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, so I have written h पॉजिटिव, a पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव. हाफ इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, q e बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन t स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t नाउ? क्या होगा वैल्यू? सो दिस इज h me इंटू 2 डिवाइडेड बाई q. ये हो गया, यही हुआ ना टाइम का वैल्यू. सेकेंड केस में तुमसे क्या बोला है? सेकेंड केस में इट इज सेइंग कि देयर इज प्रोटॉन फॉलिंग डाउन, एंड तो प्रोटॉन के केस में भी सेम कैलकुलेशन करोगे. ठीक है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज इन विच सेंस? इज इन द डाउनवर्ड सेंस, एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So force, proton is a positive charge, force will act in the direction of electric field. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, so force will be same, acceleration will be different क्योंकि mass is different. So here you will write mass of proton, only acceleration is different. So here acceleration value हमें क्या रखना होगा इस यहाँ पे different. ठीक है, so simply mass will change. If T1 is this or T electron is this, then T proton will be how much? 2hmp by q. अब आप ध्यान से देख लो किसका टाइम ज्यादा है किसका कम है. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यू कैन सी हियर, है ना?
सो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट मीन्स जिसका मास कम होगा उसको कम टाइम लगेगा गिरने में. सो इलेक्ट्रॉन विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, प्रोटॉन विल टेक greater amount of time. Let me know now. अगर तुम लोग थोड़ा भी एफर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि दिस इज नॉट योर 9th और 10th स्टैंडर्ड थिंग. ठीक है, यू नीड टू कैरी सर्टेन बैकग्राउंड एंड मिनिमम बैकग्राउंड. मैं कुछ ज्यादा नहीं तुम लोगों से डिमांड कर रही हूँ. आई एम जस्ट डिमांडिंग द बेसिक थिंग कि थोड़ा सीरियस हो जाओ क्लासरूम में. ठीक है, एनीबडी हु गॉट दिस, हु कुडंट गेट दिस, सॉरी, एनीबडी हु कुडंट गेट दिस? Yes, electron will take less time. Yes. Can you see it now? Even if you are not able to understand it completely, I will suggest you one more thing. Again, go through the question. Try doing it yourself. Okay? Then only you will understand. है ना? Maybe you are lacking somewhere. I cannot understand ना कहाँ पे तुम lack कर रहे हो. तो अगर तुम्हें वैसे doubt पूछना है, you can tell me specifically where you are getting stuck. वैसे पूछो तो मैं बता पाऊंगी. क्योंकि फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? सो इन दिस केस यू कैन टेल मी. अभी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वेयर यू आर एग्जैक्टली गेटिंग स्टक, दैट यू लेट मी नो. ठीक है, टेक योर टाइम, टेक 30 seconds, लेट मी नो. आई एम हियर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. नो डाउट, चलो ठीक है. नाउ दिस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम. कितने लोगों को पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? चलो बताओ मुझे. व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? एनी आइडिया, एनीबडी? I will appreciate your answers. Let me know. Right or wrong doesn't matter. Let me know. But yes, चलो ठीक है. Yes, what balanced? Yes, Akshay, Akshaya, Rama, Akshaya. Okay. Yes, you're correct. Hemant, what is balance? Forces, right? So equilibrium का मतलब ये होता है ऐसा सिस्टम जो कि बैलेंस्ड है, यानी कि जिसपे नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो. सो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो एंड ऑल्सो नेट टॉर्क जीरो. टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या लग रहा है सिस्टम पे? जीरो लग रहा है. ठीक है, सो दैट विल गिव यू व्हाट? करेक्ट आंसर. अविनाश, सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि फोर्स को बैलेंस होने के लिए कोई भी बॉडी पे अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर फोर्स शुड बी सेम एज 10 न्यूटन बट डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट. ठीक है, तो अभी चार्ज सिस्टम के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम थिंग. जैसे ये सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा. ठीक है, थैंक यू. So this is a single charge, no other force is acting, so there is no question of equilibrium. कोई फोर्स नहीं लग रहा. Now this is a system, टू चार्ज सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस चार्ज की बात करो तो इस पे फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? इधर, बिकॉज दिस क्यू विल रिपेल दिस स्मॉल क्यू, है ना? सो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. वी कैन नॉट से दिस इज इन इक्विलिब्रियम, है ना? नॉट इन इक्विलिब्रियम. टॉर्क के बारे में अभी मैं कैसे डिस्कस करूं? टॉर्क तो तुम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना. टॉर्क इज बेसिकली एनीथिंग, जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए, टू मेक एनीथिंग ट्रांसलेट यू अप्लाई फोर्स, टू मेक एनीथिंग रोटेट यू अप्लाई टॉर्क. ठीक है, एंड टॉर्क इज रिटेन एज आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द I mean, this is totally a discussion of that class, but I would say R is position vector of that force from the point around which you are calculating torque. ठीक है, the least thing that I can say is yes, turning effect. Whatever is generating turning effect, that is your what? That is torque. So अविनाश, तुम इसको एक होमवर्क की तरह लो. आज के क्लास के बाद जाना यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट इज टॉर्क, कंप्लीट वीडियो उसका एक वॉच करना.
ठीक है. सो जो चीजें नहीं आ रही है ना, वी हैव टू पिक दिस. वी डोंट नीड टू एक्यूमुलेट आवर प्रॉब्लम्स. ठीक है. वॉट एवर इज प्रॉब्लम, identifying the problem is the first step and good thing. Second thing is taking the action. So तुम्हें टॉर्क में दिक्कत है, इस क्लास में तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती है ना, लिमिटेशन है. So what you have to do, go to YouTube, search for torque, learn it, how to calculate torque, how to draw the direction. Do it please. Yes, Hemant, correct. Rotational analog of force. Yes, yes, Avinash, do it. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट दिस फोर्स, इस फोर्स पे भी दिस वन विल, इस चार्ज पे भी दिस वन विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन. यस रिहाना, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. सो दिस इज, on this also force is acting. It means this is also not in equilibrium. Just we are trying to identify कि कौन कौन इक्विलिब्रियम में. अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम में कितने चार्जेज है, 3 चार्जेज है ना. And this system will be in equilibrium only if force acting on all the charges is zero. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चार्ज पे फोर्स जीरो लग रहा है, we will say it is in equilibrium. No, because this system consists of 3 charges. So force acting on all the charges should be zero, and then only we will say system is in equilibrium. तो किसी एक पे भी आप फोर्स कैलकुलेट कर लो. जैसे कोई भी एक पहले पिक करती हूँ मैं. Let's say on this we are calculating. So negative charge will attract this charge towards itself in this direction. This Q will repel it in this direction. So force will act along this line. Okay. So on this Q charge, one force is acting in this sense, another force is acting in this sense. Definitely, these two forces का sum zero नहीं हो सकता, क्योंकि these two are vectors having certain angle. Vector का sum zero कब होता है? When they are equal in magnitude and oppositely directed. So definitely this charge is not in equilibrium. Similarly, आप इस चार्ज की बात करो, इस पे Q चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, माइनस Q इधर लगाएगा. Again, resultant of these two forces at certain angle is not zero. So this is also what? This is also not in equilibrium. ठीक है. Now, if you talk about negative charge, then on this negative charge, this Q charge will attract it towards itself. This Q charge will also attract it towards itself. So minus Q पे भी net force लग रहा है. Done. So this is also not in equilibrium. Overall system is not in equilibrium. Even if on any one charge net force is not zero, we will say it is not in, its system is not in equilibrium. That particular charge is in equilibrium, but overall, if you are considering whole charge as one system, then system is not in equilibrium. ठीक है. अब देखो, अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम अटेन कैसे किया जाए. ठीक है, क्योंकि फ्रॉम दिस पोर्शन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन. सपोज कर लो हमारे पास 2 चार्ज थे, अभी अभी हमने देखा कि दिस 2 चार्जेस Q and Q at separation R, if this is one system, then this system is not in equilibrium because net force is acting on both the charges, right? So to make this in equilibrium, now I am trying to keep another negative charge somewhere so that this whole system can be in equilibrium. ठीक है. तो 2 चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं था, so we are bringing another third charge and we are trying to see कि उस थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए, where to place that third charge so that system will be in equilibrium. जैसे यहाँ पे भी हमारे पास पहले ये 2 चार्जेस थे, है ना, और थर्ड चार्ज को we kept it somewhere here, and if we are keeping third charge somewhere here, system is still not in equilibrium. इक्विलिब्रियम में नहीं था ये. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि instead of keeping this minus Q charge along any other line, we are keeping it along the line joining these 2 charges. ठीक है. सो यहाँ पे रखा है. अब देखो फोर्स क्या क्या लगेगा. चलो इस पे फोर्स निकालते, डायरेक्शन चेक करते. So on this Q charge, minus Q will attract it, so it is this. And this plus Q charge will repel this Q. So repulsion का मतलब खुद से दूर फोर्स लगाएगा, यानी कि इधर. So both the forces are acting in the same direction. It means it will have a net force acting. Here net force is not zero on this charge. It means this system not in equilibrium because इस system में कितने charges हैं? 3 charges हैं. And on this charge, net force acting is not zero. So system is not in equilibrium. क्योंकि इस सिस्टम में ये चार्ज मूव कर रहा है.
सो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक मूव कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि चलो यहाँ रखने से तो नहीं हुआ, लेट्स कीप इट हियर। सो अगर यहाँ रखते हो, लेट्स कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज नाउ। So if you calculate force on this charge, what will happen? See here, this minus q will attract it towards itself, and this q will repel this q. So repulsion का मतलब खुद से दूर force लगाएगा. Again, both the forces are in same direction. F net acting on this q is not zero, so system not in equilibrium. System not in equilibrium. ठीक है? सो ऐसे भी नहीं रख सकते। थर्ड केस में मैंने क्या किया, दोनों चार्ज के बीच में रखा है। नाउ लेट्स चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द चार्जेस। सो अगर इस क्यू की बात करो तो नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो फोर्स इधर लगा। दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल इट, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस क्यू इन दिस डायरेक्शन, खुद से दूर भेजेगा। सो बोथ दिस फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो we can adjust magnitude in such a way that these two forces can become zero। क्योंकि अगर एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है, F1 F2 are oppositely directed, and if we can manage the magnitude, F1 can be equal to F2, and in that case this charge will be in equilibrium। ठीक है, बट इस सिस्टम में और भी दो चार्जेज हैं, सो लेट्स चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ दोस टू चार्जेज आल्सो। सो थर्ड केस में एक काम करो, बीच वाले का इक्विलिब्रियम हम चेक करते हैं। So this is this, this is this, this is this. So मिडिल वाले का चेक करो। मिडिल वाले पे ये चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट किया, डन है। दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट कैन बी जीरो। नेट फोर्स कैन बी जीरो if we manage the magnitude. So there is possibility here also, possibility है, कैन बी जीरो। सो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसका भी चेक कर सकते हो, वो भी आएगा। सो इफ यू हैव टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लाइक दिस, एंड इफ यू आर आस्क्ड वेयर वी शुड कीप अ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, देन यू विल से थर्ड चार्ज को इन दोनों के कहीं बीच में रख दो। ठीक है, ये एक केस मैंने तुम्हें समझाया। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज यू आर गिवन वन चार्ज इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, and then it is asked where we should keep the third charge so the system will be in equilibrium. So you need to check things properly. ठीक है, डायरेक्शन को प्रॉपरली चेक करना, then you will get the answer. क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। I should pause here so that I can take your doubt. Any problem if you are facing, let me know. किसी को कोई समझने में डाउट है तो बताओ। नो प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। I can explain things if you are not able to understand. Let me know whatever you found problematic. बता सकते हो, ठीक है? थ्री चार्जेज आर देयर, तो कैसे अटेन करें इक्विलिब्रियम? बाय कीपिंग थर्ड चार्ज केयरफुली। जैसे अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हमारे पास ऐसा चार्ज था ना, ऐसा क्यू था, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया, थर्ड नेगेटिव चार्ज को, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। यहाँ प्लेस करके देखा तो भी नहीं हुआ, यहाँ देखा तो मिल गया। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग की जहां पे तुम्हें हर बार चेक करना होगा। डन है कि आई मीन हाउ टू अटेन थिंग्स इन इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारे पास दो चार्ज सिस्टम है, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज को कहाँ रखे कि इक्विलिब्रियम में होगा? फॉर दैट यू नीड टू टेस्ट, you need to test the equilibrium of each charges. So on each charge you see what is the direction of forces acting. If it is opposite, there is chances equilibrium can be there. ठीक है, सो चेक करना है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, पहले एक बार इसको पढ़ो।
आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, read the question carefully, try to understand. Okay, what's the thing? Yes, Priya, दिस इज नॉट करेक्ट। अभी अभी मैंने बताया है तुम लोगों को इस केस के लिए हाउ यू कैन डू मिस्टेक्स यार। ध्यान से देखो, साइन को देखो, चार्ज के साइन को ध्यान से देखो जो तुमने आंसर किया है। सी इट केयरफुली। प्रिया, रिहाना, यस, वेरी गुड। प्रिया आप रीचेक कर लो, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, साइन गलत जा रहा है, चेक करो एक बार। ओके, आई गॉट 11 आंसर्स, आउट ऑफ दोस 2 आर करेक्ट, सॉरी, नो, 4 आर करेक्ट, और मे बी नो, ओनली 2 आर करेक्ट। किसने अभी आंसर किया? रिहाना, यू नीड टू रीचेक एक्चुअली। प्रिया रीचेक करो, मैग्नीट्यूड में भी प्रॉब्लम है आई गेस। यस, क्वेश्चन क्या है देखो, चलो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? A charge q is placed at the center of line joining two equal charges. So there are two equal charges. One is plus q, another is also plus q. ठीक है? And now a charge q is placed at the center. So at the center, another charge q is placed such that system of three charges are in equilibrium. Then q का वैल्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, सो लेट्स से प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन आर। ठीक है, डन है, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। अविनाश, यस, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आया, डन है। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है, so to bring this two system of charges in equilibrium, we need to place third charge here, somewhere in the middle, somewhere in the middle, and that charge will be of negative nature। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम इसका इक्विलिब्रियम देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। सो दिस स्मॉल क्यू चार्ज should act force on it in this direction, and it is only possible if this q is a negative charge. So definitely q is a negative charge. Now these two forces has to be equal. So let's say this is F1, this is F2, done है। नाउ F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू है k q स्क्वेयर बाई r स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? सो दैट इज k q q बाई, डिस्टेंस कितना है? q और स्मॉल q में मिडिल में रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है एग्जैक्टली। देन दिस डिस्टेंस इज r बाई 2, सो दिस इज r बाई 2 का होल स्क्वेयर। सो व्हाट विल बी द थिंग हियर? k q q बाई r स्क्वेयर इंटू 4। अब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना है? इक्वल। तो मैग्नीट्यूड को मैं इक्वेट कर रही हूँ, एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर, क्या मिल रहा है बताओ? k 1q got cancelled like this, r square got cancelled, a small q is q by 4, magnitude is q by 4, sign is already negative, so answer will be minus q by 4. So correct answer should be what? It should be A. अमिया, जेएनडी हैदराबाद, चेक कर लो एक बार एंड लेट मी नो इसको समझने में क्या दिक्कत हो, बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दो चार्ज का सिस्टम है, थर्ड चार्ज को वी आर प्लेसिंग सच दैट टू मेक थ्री चार्ज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो प्रॉपरली फोर्स के डायरेक्शन को चेक करना है तुम्हें, टू कैलकुलेट द साइन ऑफ थर्ड चार्ज यू आर कीपिंग। ठीक है, एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है। ठीक है,
Is it sorted from everyone's side? You're able to understand this thing? देखो, I understand you're just starting with electrostat, but I would say for one whole year you have been in touch with class 11 physics, and that is far, far more complex than what I'm teaching now. So I expect certain level of understanding from you people, and even if you're not having, it's not a worry, but yes, you need to cooperate. Cooperation meaning you need to be first thing more attentive. Second thing, you need to do proper homework. Homework कहने का मतलब ये नहीं what I'm that I'm giving you some questions, you have to do that. No, conceptually you have to revise each and everything whatever I'm teaching. And second thing, from that concept you have to do questions from your textbook, be it NCRT or you are doing previous year questions. Do it, please. Okay, so that is a sort of maturity I expect out of you people. Okay, chalo. Now electric field because of continuous charge distribution. So this is actually an interesting topic. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी कैन कैलकुलेट kq by r square. डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर, ठीक है. But what if charge is not point charge? If there is a rod, if suppose there is a rod and if it is positively charged, let's say, and we have to calculate electric field because of this rod, how we will do this? Okay. So this is called continuous charge distribution, where charge is not concentrated at one point. That is, it is not a point charge. Rather, charge is distributed along a length. In this case, the rod has a length. Let's say Q charge is distributed in L length. Then here we define linear charge density indicated by letter lambda, which is Q by L. Okay. So here charge is not concentrated at a point. It is concentrated along the length. Then so here there is continuous charge distribution. Similarly, अगर तुम्हारे पास disk है and disk में I'm just dividing charge like this. So here charge is distributed in area, not along length, in area. So here we define charge, areal charge density, and that is if here total charge is Q and radius is capital R, then this is charge per unit area. Area कितना होगा? Pi r square. Similarly, if you have a sphere, ठीक है, hollow sphere या solid sphere है, ठीक है, and inside that solid sphere there is charge kept. So solid sphere has a volume. So here charge is distributed in a volume, and we define volumetric charge density indicated by letter rho, and it is Q by 4 by 3 pi r cube. So if you encounter any body where, or if you encounter any charge system where charge is not concentrated at a point, rather along the length, in area or in volume, then we actually cannot directly use this kq by r square wala formula. Done it? Because if you calculate electric field at point P because of the rod, then this point charge is at this distance, this point charge is at this distance, this one is at this distance. So all the charges, point charges, are at different distance. We cannot use the formula. Then so here integration will come into use. और इसलिए मैं बोल रही थी आप लोगों को कि इंटीग्रेशन का रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये होमवर्क देती हूँ. होमवर्क क्या है तुम लोगों का, प्लीज तुम लोग करके आना. होमवर्क का मतलब अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाया, वट एवर आई हैव टॉट रिवाइज, वट एवर आई हैव टॉट रिवाइज. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, डू इंटीग्रेशन प्रैक्टिस. इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. So if you want your understanding to be better, and if you want my job to get easier or possible, easier भी नहीं बोलूंगी, possible, then do practice integration and also do differentiation practice. ठीक है. कितने लोग करके आओगे ये बताओ मुझे. देखो एक चीज बताऊं, अभी से अगर तुम लोग गिव अप करने लगोगे ना या बात नहीं सुनोगे तो क्या होता है ना, धीरे धीरे when 3-4 more months will pass, then there won't be any option in your hand, and then you will completely ignore everything and you will be left with nothing. I am telling you. So it is the okay, JNV Hyderabad, thank you.
So it is the right time when you take things positively for your benefit. Okay, start taking things positively. And second thing, wherever you are lacking, I know it's somewhat your fault. Maybe it's not your fault. Whatever the thing is, reason is not going to help you. You have to take the action. Do take action. Most of you are at home, so you have good access to YouTube and everything, internet, phones, laptops, everything. So do have a look over lectures available on YouTube. There's so many lectures. Okay? So please do it. Okay? Okay, thank you everyone. करके आओगे ना सब लोग, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये प्यारी बात है कि तुम लोग करके आओगे, एंड आई एम रियली हैप्पी. So actually, I want you people to be doing good, है ना? Who there is no teacher who will want their students to not do good or something like that. We always just strive or work hard for this to happen. So I really crave you people to be doing well. जैसे देखो, first day when we started the class, there were 80 students, and just now you look at the number of students in the classroom, 35. How many drop? Just see here, because people are not able to survive the pressure. तुम्हें पता है प्रेशर को सरवाइव करना कितना जरूरी होता है लाइफ में. यू कैन नॉट ग्रो विदाउट इट. यू डोंट हैव टू गिव अप टू प्रेशर. यू हैव टू सरवाइव अंडर इट. ठीक है? यू हैव टू सरवाइव अंडर इट. और ये सर्वाइवल हम कैसे करना है? दुख से नहीं करना है. वी हैव टू गिव आवर सेल्फ टास्क एवरी डे. हर डे खुद को टास्क दो. ठीक है, आई एम नॉट गुड इन मैकेनिक्स, लेट्स डू 5 क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स. ओके, आई एम नॉट गुड इन रोटेशन, लेट्स टेक 5 क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशन. So when you start doing such small things ना, it actually helps you. So मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे अभी 35 दिख रहे हैं. After 1-2 months, I'm telling you, here the number will be 10 or 5. Even maybe it can get 0. ठीक है? So this is pathetic, I would tell you. I mean, people are not able to take up words. People are not able to take up pressure. I mean, this is not our identity. In a student life, you have to really work hard. Yes, I'm always there to help you. Larson, you just attend classes, you do homework, you uh, practice things. I'm telling you, after 2 months itself, if you follow things properly, you will feel different. I'm telling you, you will feel different. Not because of me, but because you did things for yourself. Nobody can change you. I'm telling you, nobody can do good for you. It has to come from deep within you, right? You can only serve yourself. Nobody else can do. ये सारे बेकार बातें होती है कि somebody else did something for you. It doesn't work, I would say. मतलब ये at first look it seems like it is working, but it doesn't work. Which calendar, Rama? Avinash, thank you. Which calendar you're talking about? Class wala? I mean, enable classes, right? That is there on the portal. अच्छा, एक काम करती हूँ, कल की क्लास में व्हेन आई विल कम, आई विल फर्स्ट ओपन द पोर्टल. अच्छा, एक काम करती हूँ, अभी अभी खोलती हूँ. लेट मी ओपन द पोर्टल नाउ. ठीक है? आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस थिंग एंड लेट मी गो टू द गूगल. आई विल शेयर इट. ठीक है, अभी शेयर करती हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम. ठीक है? ओके अविनाश, बाय बाय. जस्ट गिव मी सम टाइम. Okay, I'm just in the process. Give me some time. Okay, so you must be getting something like this. Have you visited this website, Rama? Sanju Sri, bye bye. 14th कब है? 14th is tomorrow or what?
देखो कल संडे को क्लास नहीं होगी, अदरवाइज देयर विल बी क्लासेस, ठीक है। सो यहाँ पे जाओ, अवंती क्लास लिंक्स आर देयर, क्रैश कोर्स, नीट, एनेबल क्लास 12th 11th, मूविंग 12th, इसी लिंक को तुम लोग ओपन करते हो, राइट? इफ यू ओपन दिस लिंक, यू कैन सी हियर दिस इज द क्लास टाइमिंग, ठीक है। एंड दिस इज द फिजिक्स वाला थिंग, लेट लेट मी चेक, मैं खुद चेक करना चाह रही हूँ। सो ओके, सो आई नीड टू स्विच द अकाउंट। यहाँ पे कैलेंडर नहीं लिखा है क्या? देर इज नो क्लास लिंक्स एंड नोट्स इज हियर, ठीक है। स्टूडेंट आईडीज, ओके, लेट मी चेक। Okay, so even if it is not there, I will be sharing. I will share the thing with you. Okay, if you are not getting it, Sunday का class नहीं है. Okay, Sanju. ठीक है, Rama. I will do one thing. I will share with you the time. I mean whole calendar. ठीक है, और I will ask my team to update it here also. Maybe they must have updated somewhere. Yeah, right now I'm not able to find it. It must be here somewhere, I guess. I'm not able to see it. Enable classes. यहाँ पे check करते. Let us check. No, it's not here. Okay, I will ask with my team. ठीक है? चलो. अच्छा, there is Bihu. Okay, 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 okay. But there is no as per holiday in Avanti, I would say. So there will be classes. क्योंकि this is exam time, ना? High time. This is for students. So there is no holiday actually. We will be having classes. ठीक है? So take time to attend the classes. I will request. चलो ठीक है. ठीक है, Rama, I will forward to you the calendar. Don't worry. चलो ठीक है, everyone. Take care of yourself. Okay, thank you. Bye bye everyone. Yes, please try to attend. ठीक है? क्योंकि if you will miss next class, that will be an issue. We will be discussing things. Bye, Avinash. Bye bye everyone. Bye, take care. Take care.